Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर दबो एवं सब्सक्राइब कर दबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रु तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे सेल मॉडल विषय पढ़ा यार एविडेंस जोटा कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर रो सेल स्ट्रक्चर आउ तार बेसिक एजम्पशंस भी देखिबा जोटा कि सेल मॉडल रे आमे नेबा तो देखो जेतेबेले आमे लिक्विड ड्रॉप मॉडल विषय रे पढुतला एक्चुअली सेथिरु बहुत गुडा जिंस सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन तमरो आसिला अबाउट द जनरल ट्रेंड्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक नंबर z एंड मास नंबर a बट से लिक्विड ड्रॉप मॉडल टा फेल हैला को जगह इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द डिटेल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्ली ओके सो सेल मॉडल होची गोटे वेरी इंपोर्टेंट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर आउ ए सेल मॉडल टा एक्चुअली सक्सेसफुली एक्सप्लेन करि पाला अबाउट द मैजिक नंबर जोटा कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन करि पारि नथिला ता सहित ग्राउंड स्टेट स्पिन्स देन योर मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्ली ओके स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को भी आपको ये एक्सप्लेन करला ओके अच्छा नाउ एठी आउ गोटे जिनस भी एक्सप्लेन करूची द फेनोमेना ऑफ न्यूक्लियर आइसोमॉर्फिज्म ओके सो डिटेल ए विषय आमे पढिबा जेमति आपको पढिबा सो बेसिक डिफरेंस हला बिटवीन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड सेल मॉडल इज दैट लिक्विड ड्रॉप मॉडल रे न्यूक्लियस को आमे एज्यूम करथिला जे सेथिरे थिबा जो न्यूक्लियॉन्स एक्चुअली दे एक्सर्ट influence on each other only at close range okay mane within the immediate neighbors but cell model रे actually it is assumed that these nucleons do not interact with each other at all okay totally semane nijo सहित interact करंती नाही बोली हमें assumption नेबा अच्छा so एठी देखो according to the cell model the nucleus consists of protons and neutrons mane nucleons which are placed in certain discrete levels or cells just like your electrons जोटा कि discrete cell रे थाए आउ atom भितरे थाए nucleus रो चारिपटे घूर थाए okay so according to Pauli's exclusion principle आमे जानिछु two protons proton माने एटा हला fermion having opposite spins and similarly two neutrons having opposite spins are accommodated in a particular cell so in this way the first cell will accommodate two protons and two neutrons and is more tightly bound than the other cells okay let us now see the basic assumption in case of your cell model देखो ये फर्स्ट assumption रे हमें कहूछु जे न्यूक्लियस भितर थिबा जो न्यूक्लियन्स अछि they form closed subcells just like that of your electrons in case of your atoms तेणु करी हमें याकू सेल मॉडल कहिबा तापरे सेकंड पॉइंट रे कहूची ए जो न्यूक्लियन्स माने एक्चुअली दे आर अरेंज्ड इन some type of closed cell structure with a suitable number of protons and neutrons third point रे कहूची extra nuclear electrons जदि हमें देखिबा they are revolving in the Coulomb electrostatic field of the nucleus which is assumed to have heavy and very large distance okay so ei jo Coulomb electrostatic field द्वारा जो इलेक्ट्रॉन माने रिवॉल्व करजंती तेणु करी न्यूक्लियस टा एक्चुअली बहुत हेवी आउ लार्ज डिस्टेंस रे ई न्यूक्लियस मान कठारो एटा अछि ओके सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ओनली इन सर्टेन अलाउड और परमिटेड ऑर्बिट जोटा कि हमें बोर्स एटम मॉडल रे भी पढिचो तापर फोर्थ पॉइंट रे ये कहूची each nucleon move independently inside the nucleus in a fixed orbit under the effect of central potential okay which is produced by the average interaction between a minus 1 number of nucleons inside the nucleus okay so ei gote nucleon जदि अछि
या को आमे कंसीडर करबा ताहले बाकी जितकी न्यूक्लियन हैला दैट विल बी a-1 सो एई जो a-1 रेस्ट जितकी न्यूक्लियन रहिला तांकर सेंट्रल पोटेंशियल इफेक्ट आसीबो ड्यू टू द एवरेज इंटरेक्शन बिटवीन दीज a-1 न्यूक्लियन सो दैट एई जो न्यूक्लियन को आमे कंसीडर करछु that will move independently inside the nucleus गोटे फिक्स्ड ऑर्बिट रे ओके आकु बढ़िबा एबे फिफ्थ पॉइंट रे एबे देखो ये कहूची जे जदि आमे एबे स्पिन आ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देखिबा ताले ईच न्यूक्लियन इज assumed to possess spin angular momentum तार वैल्यू हैला स्क्वायर रूट ऑफ s into s plus 1 h cross similarly orbital angular momentum हैला स्क्वायर रूट ऑफ l into l plus 1 into h cross. Then your sixth point, each nucleon moves freely in a force field which is described by the potential which is a function of radial distance from the center of the system. So radial distance माने एटा होची central potential. Okay. तापर लास्ट पॉइंट रे कहूची एनर्जी लेवल्स बा सेल्स गुडा जो अछि दे आर filled according to the Pauli's exclusion principle. Okay. Now let us see the evidence for the nuclear cell structure. देखो आमे ऑलरेडी जानिछु जे जेते बेले गोटे न्यूक्ली रे थिबा प्रोटॉन्स आउ न्यूट्रॉन माने न्यूक्लियन्स तार संख्याटा गोटे पर्टिकुलर नंबर जोटा कि आसीची एई मैजिक नंबर जाको कहा जाय 2 8 20 50 82 126 ताले याको मैजिक नंबर और सेल नंबर भी कहा जाय ताले देखा गला जे सही न्यूक्लीटा एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी देखौची ओके एंड याको आमे कंपेयर करि परिबा जस्ट लाइक दैट ऑफ योर सेल रूल जेते बेले इलेक्ट्रॉन गुडा न्यूक्लियस चारि पटे घुरंती सर्टेन ऑर्बिट्स रे ताले प्रथम ऑर्बिट रे दुईटा इलेक्ट्रॉन तापरे सेकंड ऑर्बिट रे 8टा देन थर्ड रे 18टा एंड सो ऑन सो याको एई हिसाब रे आमे सेल रूल इलेक्ट्रॉनिक सेल रूल सहित कंपेयर करि परिबा so this is showing us that there are definite energy cells inside the nuclei okay so the observation which is based on the following experimental evidence the first point रे कहूची suppose गोटे न्यूक्लियन हैला having number of protons माने z और number of neutrons माने n equal to a minus z suppose यार संख्याटा आसिला 2 माने एठी हीलियम रो हम एग्जांपल नीचु z equal to 2 a minus z equal to 2 किबा संख्याटा आसु जदी 8 ताले ऑक्सीजन z equal to 8 a minus z equal to 8 then these two are more stable than their neighbors तापर सेकंड पॉइंट रे एबे देखो जदी किछिटा हमें से वाला न्यूक्ली नबा for which z and a minus z is equal to मैजिक नंबर माने प्रोटॉन संख्या आउ न्यूट्रॉन संख्या मैजिक नंबर सहित समान अछि ताले they are showing special stability so these are different elements having z or n value equal to magic numbers so एठी जदी हमें बाइंडिंग एनर्जी एलिमेंट्स गुडा देखिबा ताले सेही कर्वटा एक्चुअली किछरा मैक्सिमम माने ब्रेक और किंग्स देखैबो एही हिसाब रे मैक्सिमम तार कर्वटा आसीबो सेही पर्टिकुलर न्यूक्ली रे ओके दैट मींस इट इज कॉरेस्पोंडिंग टू सडन इंक्रीज इन देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थर्ड पॉइंट रे देखो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट जदी हमें देखिबा ऑलरेडी मैजिक नंबर्स रे पढिछु ताले मैजिक नंबर जेतेबेले हे जाउची गोटे न्यूक्ली रो ताले इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंटटा बहुत छोटो हे जाउची नियरली जीरो हे जाउची आ हमें जानिछु इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मूवमेंट जदी जीरो आसिला ताले न्यूक्लियस will be spherical in shape okay the charge distribution will be spherical and hence it will show more stability okay so this is expected for more stable nuclei the spherical charge distribution okay so amara jo investigation gote nucleus pai actually neba we can say that the nuclear forces are strongly attractive and they extend over a very short range from the center of the nucleus okay अच्छा एबे जेमती हमें देखिला न्यूक्लियर सेल मॉडल रे एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जोटा कि न्यूक्लीटा मैजिक नंबर जदी तार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या अछि ताले यार स्टेबिलिटीटा बढ़ी जाउची ओके सो जदी बोथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर जदी मैजिक नंबर हे जाइछि ताको हमें डबली मैजिक न्यूक्ली बोली की कहिबा आ तार स्टेबिलिटीटा एक्सेप्शनली बढ़ी जिवो ओके व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम ओके अच्छा ए न्यूक्लियर सेल मॉडल रे ईच न्यूक्लियन माने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन will move independently inside the nucleus in a fixed
certain orbit under the influence of central potential Vr ଯେମିତି ଆମେ assumption ରେ ବି କହୁଥିଲା okay which is produced by the average interaction between all the remaining a minus 1 nucleons inside it okay a average central potential should be resembling a square well bhaliya yar resemblance ta habo and the position and spacing of the energy levels will be determined by the depth radial extent and shape of the potential energy well ei central potential को आमे oscillator potential बोली कहूथाउ okay so याको आमे equation रे लिखि परिबा it is assumed that the nucleons move in an average harmonic potential याको आमे लिखिला Vr equal to half k r square or half m omega square r square एठी m हेगला mass of the nucleon omega हेगला angular frequency r हेगला distance of the nucleon from the central potential आ k आसी जाउची एटा तमरा m omega square this is the wave vector so एबे जदि हमें Schrodinger wave equation देखिबा for the harmonic oscillator then it is given by minus h cross square by 2m del square plus v which is operated on the wave function psi this becomes equal to e psi a equation टा एबे हिजबो v रो वैल्यू हमें जदि पुट कर देबा देन हाफ k r स्क्वायर एठी हमें पुट कर देला याको एबे जदि हमें सॉल्व करिबा आकु ताले शेषरे हमरो एनर्जी आइजन वैल्यू टा आसीबो en will be equal to n plus 3 by 2 h cross omega एठी n जो संख्याटा आछि यार वैल्यूटा रेंज करूछि 0 1 2 3 एंड सो ऑन याको हमें ऑसिलेटर क्वांटम नंबर बोली की कहिबा आ ए इक्वेशन जो हमें पाइला एनर्जी आइगन वैल्यू रो इट इज शोइंग अस दैट द एनर्जी स्टेट्स in the harmonic oscillator model is equally spaced okay so for each energy value en there are large number of degenerated eigen function which are labeled by the orbital angular momentum quantum number which is L तो suppose n रो वैल्यू जदि इवन हला ताले L रो वैल्यू टा 0 2 4 6 ए हिसाब रे इवन संख्या आसीबो which is a state of even parity because आमे जानि छु parity is nothing but minus 1 to the power L हिसाब रे यारो कैलकुलेशन हुए similarly n जदि odd हला ताले L रो संख्या भी odd आसीबो 1 3 5 7 and so on which is a state of odd parity okay so देखो एठी various possible values of L for different n are given in this table एठी n रो वैल्यू हमें 0 1 2 3 up to 5 जाय नै छु accordingly L रो संख्याटा भी आसीबो 0 फर्स्ट रे तापरे 1 then 0 2 इवन अछि जेतु तापरे 1 3 ऑड पई then 0 2 4 then 1 3 5 so state हमर accordingly आसीगला S then P then SD then PF SD correspond to even number 0 and 2 then PF correspond to odd number of L okay 1 and 3 then your SDG then PFH and so on a number of nucleons sigla यार formula है 2 into 12 plus 1 so accordingly हमर संख्याटा आसीबो 2 6 12 20 30 42 तापर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जदि हमें देखिबा ताले संख्या आछि 2 8 20 40 70 112 सो एठी देखो गोटे जिंस ई टेबल रु हमें जो शेषरे डाटाटा ई total number of nucleons पाउछु which are possessing maximum stability as far as the harmonic oscillator model is concerned that the scheme only include the first three magic numbers 2 8 20 okay ei तीनटा magic numbers को ही include करूची so that एटा एते भी sufficient explanation दे पारलानी about the behavior of higher magic numbers however ei difficulty को हमें remove करि परिबा जेतेबेले हमें spin orbit interaction को introduce करिबा okay so let us now see the spin orbit coupling देखो न्यूक्लियस रे थिबा प्रत्येक न्यूक्लियन हमें जानि छु it is supposed to have a spin angular momentum given by s vector जदि हमें यार मैग्नीट्यूड बाहर करिबा then it will be equal to square root of s into s plus 1 h cross एठी small s हेगला यार वैल्यू टा हाफ which is the spin quantum number okay now each nucleon is also supposed to have orbital angular momentum similarly एठी मैग्नीट्यूड कैपिटल L जोटा कि orbital angular momentum तार वैल्यू आसिला square root of L into L plus 1 h cross एठी small l हेगला orbital quantum number angular momentum रो okay so यार वैल्यू टा रेंज करूची 0 1 2 3 etc and
This independent cell model further assumed the strong spin orbit coupling. Okay, so spin orbit coupling jodi ame dekhiba ताहले each individual nucleon has total angular momentum now जोटा कि आम रिप्रेजेंट करवा बाय वेक्टर j यार मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ j इंटू j प्लस 1 h क्रॉस एटी स्मॉल j हो जाउची टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर यार वैल्यूटा आसुची j इक्वल टू l प्लस और माइनस हाफ ओके ये हाफ टा माने एटा स्मॉल s रो वैल्यू ओके किंतु मन रख एक्सेप्ट इन द केस ऑफ l इक्वल टू 0 कहीं की बिकॉज l इक्वल टू 0 जदि एठी आमे नेला ताले 0 माइनस हाफ सो दैट j इक्वल टू माइनस हाफ हो जाउची तेणु करी ताको आमे इंक्लूड करिबा नाही ओके बिकॉज एठी l इक्वल टू 0 पाई केवल आमे प्लस साइन को नेबा सो दैट इट हैज ओनली वन वैल्यू l प्लस हाफ व्हिच इज इक्वल टू हाफ ओके l इक्वल टू 0 पुट कर देले एठी j रो वैल्यू हाफ आसी जिवो ओके सो thus each energy level splits off into two sub levels जोटा कि रिप्रेजेंट करुची j इक्वल टू l प्लस हाफ जिते बड़े कि s आउ l माने स्पिन आउ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दे आर पैरेलल ओके दिस इज द पैरेलल सिंबल सिमिलरली आ गोटे रिप्रेजेंट कला j इक्वल टू l माइनस हाफ जिते बड़े कि दे आर एंटी पैरेलल ओके दिस इज द रिप्रेजेंटेशन सो द सब लेवल j equal to l plus half has a lower energy than the sub level j equal to l minus half एटा मन रखिबो ओके जोटा बेसी संख्याटा जो j रो संख्या जो सब लेवल रो जते बेसी थिबो सेटा कम एनर्जी तार रहिबो एज कंपेयर टू l minus half okay thus the state l plus half represents more lightly bound nucleon okay सेटा एते स्ट्रॉन्ग बाउंड तार आसीबो नाही एज कंपेयर टू l minus half so the separation between the two sub levels increases the rapidly with l ओके l रो संख्या जते जते बढ़िबो सेपरेशन भी सब लेवल्स भितरे से हिसाब रे बढ़ी बढ़ी की जीवो आ जते बेले l रो संख्या greater than or equal to 4 is then the two sub cells lie in different cells okay and each level can have maximum of 2j plus 1 nucleons okay এই number হচ্ছে তার maximum limit টা so 2j plus 1 nucleons রহিব of same kind that is it can accommodate 2j plus 1 protons and 2j plus 1 neutrons okay अच्छा देख जिते आम गोटे न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट को देखा एक्चुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्री क्वांटम नंबर्स n l j ओके सो ये n होगा टोटल क्वांटम नंबर l होगा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आ j होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ओके सो अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नो टू न्यूक्लियन having same value of these three quantum numbers can occupy the same energy state so Pauli's exclusion principle को हमें यदि apply करिबा then two protons or two neutrons having spin plus half and minus half they are allowed in each level so for example first example यदि हमें नेला for the case of l equal to 0 ताले j equal to l plus half plus part ता ही नेबा minus नेबानी so j रो value आसी गला half and the number of nucleons in the level will be how much this is the formula 2j plus 1 so j equal to half put कर देले हमरो 2 बाहरला value okay l equal to 0 पाई तापरे l equal to 1 जदि put करछु j रो value टा accordingly दुईटा बाहरिबो गोटे हला 3/2 गोटे हला half so the number of nucleons in the two sub levels एबे 2j plus 1 गोटे आसीबो 4 आ गोटे आसीबो 2 respectively so the total number of nucleons in this level will be 4 plus 2 equal to 6 okay so this is giving a progressive total number of nucleons in the nucleus tapare next asuchi then your 8 okay and so on so the values of your l for the nucleons are represented by the spectroscopic notation which are similar to that of your electron so l equal to 0 1 2 3 and so on ये रिप्रेजेंट करछि स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन जोटा कि एस पी डी एफ जी एच एंड सो ऑन ओके सो एई स्कीम रे जदि आमे 1s स्टेट को देखिबा ताले एई स्टेट पई l रो वैल्यूटा 0 तणु करी एबे जदि आमे s रो वैल्यू हाफ नेबा ताले j रो हेगला वैल्यूटा l प्लस हाफ व्हिच इज इक्वल टू हाफ आ l माइनस हाफ को आमे अलाउड करी रखिना हो ओके दिस इज डिस्कार्डेड ओके
So this state has number of nucleons which is 2j plus 1 equal to 2, and this state is represented as 1s half ଆଉ ବାହାରେ ଏଠି 2 ମାନେ ଦୁଇଟା ଏଠି ରହିବ ओके अच्छा 1p state जदि आमे देखिबा it has l equal to 1 so j equal to l plus half so it becomes 3 by 2 or j equal to l minus half so it become half so this state splits into two substates okay ये जो p state टा 1p state टा so गोटे substate रे रहिबो number of nucleons 4 आ गोटे रहिबो 2 ओके सो हिसाब रे 6 टा न्यूक्लियन रखिला ए स्टेट टा p स्टेट टा रेस्पेक्टिवली आ रिप्रेजेंट करा जाई परिबो याकू जोटा की चारिटा न्यूक्लियन रखुची सेटा हला 1p3/2 देखो बाहर 4 लिखा हिची सिमिलरली जोटा दुईटा न्यूक्लियन रखुची दैट विल बी 1p1/2 व्हिच इज containing two nucleons आ मने रख ए 1p3/2 जो अछि एटा तळे रहिबो 1p1/2 टा ऊपर रहिबो रेस्पेक्टिवली एंड अकॉर्डिंगली हायर ऑर्डर स्टेट भी ता पई भी हमें बाहर करि परिबा नंबर ऑफ न्यूक्लियंस सो याको हमें डायग्राम रे देखो रिप्रेजेंट करि परिबा एज यू कैन सी इन दिस फिगर देखो एज यू कैन सी इन दिस हेडिंग एटा आसिला तमरो ऑसिलेटर नंबर n 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन तापरे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर अकॉर्डिंगली n रो वैल्यू 0 हेले l रो वैल्यू 0 हबो n रो वैल्यू 1 हेले l विल बी 1 n इक्वल टू 2 हेले l इक्वल टू 0 2 then n equal to 3 हेले l will be 1 3 and so on यार टेबल भी हमें देखिछु तापरे रहिला without spin orbit coupling then with spin orbit coupling जो थरे कि j रो वैल्यू l plus or minus half होउची then the number of nucleons in the birds जोटा कि 2j plus 1 और total number of nucleons so हमें याकू बॉटम रु स्टार्ट करिबा ई जो स्ट्रक्चर टा देखो एठी एटा होची तमरो एक्चुअली एनर्जी स्ट्रक्चर टा okay this is the energy structure so first l equal to n equal to 0 so that l is also equal to 0 this is the 1s state or याको हमें रिप्रेजेंट करिबा 1s 1/2 which is containing two nucleons so total हे गला भी 2 तापरे आसिला n equal to 1 for which l is equal to 1 this is the 1p state दुईटा एबे हेबो स्प्लिट करिबो एटा 1p3/2 तळे रहिबो 1p1/2 ऊपर रहिबो so 1p3/2 रे चारिटा न्यूक्लियन 1p हाफ रे दुईटा न्यूक्लियन so टोटल हे गला 6 टा ओके सो एई 6 आ एई तळे 2 मिसी के हे गला टोटल 8 ओके तापरे नेक्स्ट जिबा n equal to 2 हेले एबे l रो दुईटा पॉसिबल वैल्यू आसीबो 0 आउ 2 ओके सो 0 आउ 2 आसिला सो देखो फॉर द स्टेट 1d ओके 2 जोटा रिप्रेजेंट करची it will split into 1d 5/2 and 1d 3/2 accordingly 6 and 4 numbers of nucleons will be there then for l equal to 0 it will be 2s accordingly we will have 2s 1/2 केवल गोटे ही रहिबो सो 6 2 आउ 4 टोटल हला 12 सो ई 12 पुनी एठी 8 सहित मिसी की ही गला केते 20 ओके एंड सो ऑन एमती आकु जेते बेले हमें बढ़ी बढ़ी जिबा हमरो स्टेट बा एनर्जी लेवल्स गुडा ए हिसाब रे स्प्लिट करिकि मर्ज करिकि भी रहिबो ओके गोटे जिंस एठी मार्क करो एठी 1f 7/2 अछि ओके ए जो n equal to 3 आओ l equal to 3 so 1f 7/2 एटा देखो तळो स्टेट रे आसुची ओके एटा गुटे मैजिक नंबर रो स्टेट ए जो गारो पडिची हला सो एठी एटा जो 8 आसिला एक्चुअली ए 28 टा इट इज अ पार्शियल मैजिक नंबर ओके सो एटा भी गुटे स्टेबिलिटी को ही देखौची तापरे एठी 1f 5/2 जोटा ऊपर आसिला एटा ई दुई मझिरे 2p रो दुई स्टेट मझिरे रहउची ओके अकॉर्डिंगली 28 परे पुनी एठी 22 आसिला सो दैट 50 आसिला सो देखो एठी सबा राइट साइड रे एठी सब मैजिक नंबर गुडा हमें पाई जाउछु 2 8 20 और 28 जेमती कहली पार्शियल मैजिक नंबर देन 50 देन 82 देन 126 okay so this is the energy structure और it should be noted that जेमती मु कहउतली टेबल रे एठी 2s 1/2 which is containing two nucleons it is lying between 1d 3/2 and 1d 5/2 similarly 2p 3/2 it is lying between 1f 5/2 and 1f 7/2 whereas the level 2p half is lying between 1g 9/2 and 1f 7/2 okay sorry 1f 5/2 and so on
ओके ए हिसाब रे यार स्ट्रक्चरटा अछि ए स्ट्रक्चरटा को टिके भल से मने रखिबो ओके सो when an appropriate strength is assumed for the spin orbit interaction ताले energy level गुड़ा जो अछि of either class of the nucleons will fall into the sequence as shown in the figure जोटा हमें ऊपर डिस्कस कला a large energy gap actually देखा गला in the spacing of the levels at intervals that are consistent with the motion of the separate cells and the number of available nuclear states in each cell is the ascending order of your energy ओके एनर्जी जो हिसाब रे बढ़ी बढ़ी जाउची से हिसाब रे नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट आसुची हमर ईच सेल पई आ ये डायग्राम रो आउडी जिन सब जोना पड़ची जे देयर आर exceptionally large gaps between the energy when the cumulative number of neutrons or proton is your magic number that is 2 8 20 28 50 82 126 thus this model will give you the observed magic numbers okay so magic numbers को ये cell model भलो भाबरे verify करि परला so देखो एबे जदि हमें डिस्कस करिबा डिफरेंट सक्सेसेस और एडवांटेजेस जोटा आसिला सेल मॉडल रो देखो फर्स्ट पॉइंट रे तो आमे जेमती देखिला मैजिक नंबर को ये भलो भाबरे एक्सप्लेन कला ता सहित ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन करूची ग्राउंड स्टेट स्पिन आउ मैग्नेटिक मोमेंट गोटे न्यूक्लियर ओके जदि गोटे आमे ऑड न्यूक्लियस नउचू जोथिरे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रो ऑपोजिट स्पिन पेयर ऑफ हो जाउची सो दैट देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स कैंसल आउ जदि ऑड बा लेफ्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आमे देखिबा which is not able to pair then it will contribute towards the spin and the magnetic moment of the nucleus as a whole so total nucleus ପାଇଁ जो magnetic moment और spin टा आसीबो सेही unpaired nucleon माने unpaired proton हो कि neutron हो तारी ପାଇଁ आसीबो third point रे कहूची closed cell structure in the cell model will explain the extra stability and high binding energy then fourth point रे कहूची cell model भलो भाबरे explain करि पारला about the nuclear isomorphism okay so the nuclei having odd mass number a and having the values between 39 to 49 or 69 to 81 and 111 to 125 they are actually found in the excited state with half life ranging from few microsecond to many years okay so ei bhaliya nuclei ku ame isomer boli ki kahiba okay तापर फिफ्थ पॉइंट को आस न्यूक्लियर सेल मॉडल एक्सप्लेन करि पारला एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियर जदि गोटे इवन न्यूक्ली नबा ताले एठी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या समस्ते एटा पेयर हे कि कैंसिल हो जिवे सो दैट स्पिन आउ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैंसिल हो गला ओके thus the even nuclei should have zero nuclear angular momentum which is also a fact आ जदि हमें odd even nuclei नउचू ताले it will have half integral spin for the extra single or extra nucleon जोटा कि unpaired है कि बढ़ी जिवो okay so which should be combined with the integral angular momentum of the rest of the nucleus for the integral total angular momentum आ शेष रे जदि हमें गोटे odd nuclei नबा then each will have an extra neutron or extra proton ହେଲା गोटे गोटे न्यूक्लियन बढ़ी जीव तुमर सो दैट हाफ इंटीग्रल स्पिन एबे एठी बाहरी की इंटीग्रल टोटल एंगुलर मोमेंटम सहित ऐड हबो ओके अच्छा सिक्स्थ पॉइंट को एबे देखिबा देखो न्यूक्लियर सेल मॉडल आ गोटे जिंस भी एक्सप्लेन करूची तुमर न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट को इन टर्म्स ऑफ योर जे वैल्यूज ऑफ ऑड न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस माने जेतेबेले हमें ऑड प्रोटॉन रो कथा कहिबा it will have a positive magnetic moment due to the spin whereas the odd neutron will have a negative magnetic moment thus the spin and magnetic moment of isotropic nuclei जदि गोटे isotropic nuclei दुईटा नेबा हैला जोथिरे कि तमरो mass number टा odd थिबो but they are differing in their a values by just 2 then actually they will have same magnetic moment okay since the two added neutrons are paired off and have no effect on the single odd nucleon okay so it is contributing to the spin and magnetic moment of the nucleus for example जदि हमें कहबा दुईटा आइसोट्रोपिक न्यूक्लियस निगला सिल्वर 47107 और सिल्वर 47109
ताहले एठी समान रहिबो तमरो मैग्नेटिक मोमेंट एही दुई न्यूक्ली पई ओके 7th पॉइंट रे कहूची न्यूक्लियर सेल मॉडल प्रेडिक्ट करि पारुची इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल मोमेंट को फॉर योर ऑड ए न्यूक्लियोइड एंड इट इज ड्यू टू द लास्ट प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ओके तापरे केतेटा जगह रे ए सेल मॉडल रो फेल्युअर्स भी देखा गला सेटा टिके डिस्कस कर दबा देखो ये फर्स्ट पॉइंट रे ये कहूची सेल मॉडल डज नॉट प्रेडिक्ट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ J in case of your certain nuclei actually nuclear cell model predict करछि रे J equal to 5/2 हेबा कथा in case of your sodium 1123 but correct value टा होछि 3/2 similarly चारिटा stable nuclei which are hydrogen lithium then your boron then nitrogen actually they do not fit in the scheme of this model okay although they are stable किंतु nuclear cell model तांकर stability को explain करि पारला नाही तापर थर्ड पॉइंट रे it cannot explain the observed first excited states in case of your even nuclei at energy which is much lower than those expected from the single particle excitation शेष पॉइंट रे कहूची this model could not explain the observed large quadrupole movement of odd a nuclei particularly those which are having their nucleon number far away from the magic number ओके सेही भलिया एही भलिया जो न्यूक्लियर नंबर जहार मैजिक नंबर रु बहुत फार रोची तमर न्यूक्लियर नंबरटा ताहले तांकर जो ऑब्जर्व क्वाड्रपल मूवमेंट अछि ऑड ए न्यूक्ली भाई ताकू यही सेल मॉडलटा भलो भाबरे एक्सप्लेन करि पारला नाही सो दीज आर सम ऑफ द फेल्युअर्स ऑफ योर न्यूक्लियर सेल मॉडल थैंक यू।